Hello friends, welcome to the Bridge course. Today we will talk about most amazing and important organ of our body, whose disorders यानी कि उसका diseases forms the most common cause of death worldwide. So let us start with the same. So if you consider the commonest cause of death, यानी कि अगर 100 डेथ हो गए और आपने पूछा कि ये डेथ किसके वजह से हो, so 75% of cases cause of death. Any idea what is which organ can cause 75% of death? Good, it is a heart that is responsible for 75% of death all over the world. The heart is the most amazing organ of our body. ये कितना काम करता है पता है आपको? ये 1 मिनट में 72 टाइम्स. अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो 1 घंटे में 72 इंटू 60. एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24. So it will be 72 into 60 into 24 into 30 यानी कि एक महीने में into 12 यानी कि एक साल में. And if you consider the average life of 60 years, so this much of work is done by heart in a one lifespan. और अगर इसमें से इसने डिसाइड किया कि अभी बहुत काम हो गया, अभी 1 से 5 सेकंड रेस्ट करते तो क्या होगा? That person will be permanently at rest. That is the importance of. और ये इतना काम करता है और उसका वेट कितना है? उसका वेट है सिर्फ 150 to 200 ग्राम. अपना जो स्मार्टफोन है ना, उससे भी कम वेट, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्मार्ट. और उसका साइज़ कितना है? द साइज इज इट इज़ द साइज ऑफ योर ओन फिस्ट. एंड दिस हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म. तो आप पूछोगे सर ये मीजोडर्म क्या है? सो in order to understand this mesoderm, let us see how the humans develops. The first cell of our body, जब हम ग्रोथ होना स्टार्ट होता है तो फर्स्ट सेल कौन सा होता है? इट इज़ अ जाइगोट. और ये जाइगोट कैसे बनता है? जब स्पर्म एंड ओवम आती है, ये फ्यूज होके बनाते हैं जाइगोट. एंड दिस जाइगोट देन गोज ऑन डिवाइडिंग एंड इट फॉर्म्स 10⁻13 नंबर ऑफ सेल्स. इट टेक्स 9 months. तो ये जब डेवलप होता है ना, एक स्टेज आती है जिसमें ये 3 लेयर्स बनाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. एंड दिस एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म विल फॉर्म द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ये एमसीक्यू है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्टोडर्म इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम, एंडोडर्म इट फॉर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मीजोडर्म इट फॉर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स. एंड हार्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मसल, दैट इज कार्डियक मसल. सो ह्यूमन हार्ट इज mesodermal in origin, very important. Okay, now this our human heart is a 4 chamber. The 2 superior chambers are known as atria. They are divided into right atrium and left atrium, and 2 inferior thick wall chambers are known as ventricles, again divided into right ventricle and left ventricle. The 2 atria are separated from each other by septum. This septum is called as a interatrial septum. इसको हम क्या बोलते हैं? Interatrial septums, 2 एट्रिया के बीच में. And the 2 ventricles they are separated by septum. ये दोनों के बीच में देखो ये septum है. This septum we call it as interventricular septum. Interatrial and interventricular septum. So the next question will be कि हर एनिमल्स में हार्ट होता है क्या? और अगर हर एनिमल्स में हार्ट है तो हर एनिमल का हार्ट 4 चेम्बर्स का है क्या? सो द फर्स्ट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज नो. नॉट ऑल एनिमल्स हैव द हार्ट. सम एनिमल्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें अभी हार्ट का डेवलपमेंट कम्प्लीटली नहीं हुआ है. बट मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स, इंस्टेड ऑफ मोस्ट वी विल से ऑल ऑफ द कॉर्डेट्स आर हैविंग अ हार्ट. तो ये कॉर्डेट में 5 टाइप से आपको पता है. The first one is fish, then amphibians, reptiles, aves and mammals. तो फिश का जो हार्ट होता है वो सिर्फ 2 चेम्बर का होता है. ह्यूमन का कितना होता है? 4 चेम्बर. फिश का 2 चेम्बर. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ये इवोल्यूशन हो रहा है कि पहले 2 चेम्बर्स, फिर एम्फीबियंस आए, फिर उनमें चेम्बर्स बढ़ते गए. उनका जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्स का होता है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एव्स एंड मैमल्स, देयर हार्ट इज ऑफ 4 चेम्बर्स एंड इट इज़ अ मोस्ट डेवलप्ड हार्ट. Just a interesting one. Which animal has the maximum chambers? Any guess? Okay, let us see the cockroach. Cockroach is having a 13 chambers heart. Imagine the size of cockroach and the number of chambers in the heart. 13 chambers. But obviously the most developed heart is that of aves and mammals. Okay, cockroach में 13 भी हुए ना तो भी वो poorly develop होते हैं. उनका functions इतना नहीं होता है जितना aves and mammal का So this human heart, vertically it is divided into the right
side and the left side. The right side contains impure. What is impure? Impure means deoxygenated blood, and the left side contains pure, that is oxygenated blood. And this division we have already studied. The supergay chambers are known as atria. These are thin wall, and these are receiving chambers, यानी कि उनमें blood आएगा. In the inferior chambers, ये these are known as ventricles. These are thick wall and they are distributing chamber. देखो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया वो लंग्स के पास गया जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो ब्लड पंप किया वो एवोर्टा के पास गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और उससे वो पूरे बॉडी के पास गया. Okay, so superior thin wall receiving chambers are atria, inferior thick wall distributing chambers are ventricles. The two atria are separated by interatrial septum. याद है ना, अभी किया था हमने. The two ventricles are separated by interventricular septums. ये सब MCQs है. और आपको सिर्फ लॉजिक ध्यान में रखना है कि एट्रिया के बीच में, दैट्स वाई इंटरएट्रियल, वेंट्रिकल के बीच में यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स. So we talk about how the atria are separated from each other and how the ventricles are separated from each other. But what about the separation between atria and ventricles? आपको ये भी सेपरेट करने पड़ेंगे, बट यू कैन नॉट अप्लाई द सेम लॉजिक कि कंप्लीटली आप यहाँ पे पार्टीशन नहीं दे सकते. अगर कंप्लीट की पार्टीशन दे दोगे तो हार्ट का ब्लड फ्लो ही नहीं होगा, जो राइट एट्रियम में है वो राइट एट्रियम में रह जाएगा. सो यू हैव टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर जो सेपरेट भी करेगा, एट द सेम टाइम ब्लड को जाने भी देगा whenever it is necessary. So these are specialized structures that we call it as a walls. The walls present between right atrium and right ventricle is known as tricuspid wall, while the walls present in left atrium and left ventricles are known as a bicuspid walls. What these walls do? They allow the unidirectional, a very important word, unidirectional flow of blood. What is unidirectional? नाम में ही उसके uni means one, that it allows the flow of blood only in the one direction from atria to ventricle. उल्टा नहीं जाने देगा blood. Okay, so this is about the walls present between atria and ventricles. But at the same time there are the walls present जो left ventricle से aorta आएगा वहाँ पे भी होगा, और right ventricle से जो pulmonary artery आएगी वहाँ से भी होगा. About these walls and other things like how the heart functions, उसको कौन बोलता है कि beat हो, ऑब्वियस ना, आप तो नहीं बोलते हो कि उसको बीट हो. ये सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.